Today we are going to learn phrasal verb. Phrasal verb is a verb that has two or more words. Phrasal verb, phrasal verb is a verb that has two or more words. The second or third words it look like a preposition. ये preposition की तरह दिखता है. इसमें कई फ्रेजल वर्ब है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ए पुट ऑन को. पुट ऑन, पुट ऑफ, लुक अप, लुक एट, टेक ऑन, टेक ऑफ, wake up. These are our phrasal verbs. So today we are going to learn put on. Put on, put. So इसको हम कैसे कैसे यूज करेंगे, the different use of put on we are going to learn. Put something on. फर्स्ट इसको हम यूज करेंगे ऑपरेट करना. टू मेक ए डिवाइस ऑपरेट और टू कॉज ए डिवाइस टू प्ले समथिंग. सीडी, डीवीडी और टीवी और स्विच. सो कुड यू पुट द लाइट ऑन? Do you mind if I put the television or some music on? Don't forget to put the brake on. I put the radio on while I prepare the meal. I put the oven on to heat up while I prepare the mixture. So in these all sentences, we are using put on, making a device to operate. We are making a device to operate. नेक्स्ट पुट समथिंग ऑन वी कैन यूज टू कवर पार्ट ऑफ द बॉडी. हम किसी बॉडी पार्ट को कवर करेंगे. किससे करेंगे? क्लोथ से, शूज से, मेकअप करेंगे, समथिंग सिमिलर लाइक दैट. सो इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे. Put your shoes on, we are going out. Put your shoes on, we are going out. He put on his jacket. She puts face cream on every night. सो इन सारे सेंटेंस में हमने क्या किया है? या तो पुट योर शूज ऑन, वी आर गोइंग आउट. ही पुट ऑन हिज जैकेट. ये कुछ बॉडी पार्ट को कवर कर रहा है, यूज कर रहा है. कुछ क्लोथ शूज को पहन रहा है या फेस क्रीम अप्लाई कर रही है. तो ये सारे में कवर कर रही है, यूज कर रहे हैं. इसकी मीनिंग ये हुए. नाउ नेक्स्ट, इस थर्ड पुट ऑन समथिंग हम यूज कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ प्रिटेंड करना, बहाना करना. प्रिटेंड करना, बहाना करना. To pretend to have, to pretend to have a particular feeling or way of behaving that is not real or natural to you. ऐसा बहाना करना और ऐसी फीलिंग को शो करना जो बिहेवियर जो है वो रियल नहीं है, नेचुरल नहीं है. सो पुट ऑन उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, प्रिटेंड करने के सेंस से. वाई आर यू पुटिंग ऑन दैट सिली वॉइस? वाई आर यू पुटिंग ऑन दैट सिली वॉइस? There is no need to put on that injured expression. You know you are in the wrong. I can't tell whether he is really upset or if he is just putting it on. इन सारे सेंटेंस में वो सही जो है उसको शो नहीं कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, अपनी फीलिंग को गलत शो कर रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, पुट ऑन समथिंग में हम वी कैन यूज मेनली टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड समथिंग. ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे कि हम खाना अच्छा बना रहे हैं, उसको मेरे लिए खाना अच्छा बना रही है, या गवर्नमेंट ने ये हमें प्रोवाइड किया है जिससे हमें फायदा हो रहा है. सो मेनली टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड समथिंग स्पेशली फॉर द गुड ऑफ अदर पीपल और फॉर ए स्पेशल पर्पस, फॉर ए स्पेशल पर्पस. She put on a wonderful meal for us. She put on a wonderful meal for us. They have put on a late night bus service for students. They have put on a late night bus service for students. So these are the facilities given by the or providing something. So put on we can use in this the meaning is produce. Get heavy. Put on also हम यूज करते हैं. ए पीपल और एनिमल्स पुट वेट ऑन, वो वेट गेन कर रहा है. दे बिकम हेवी.
So I do expected to put weight on. When I gave up smoking, but I did not. I do expected to put weight on when I gave up smoking, but I did not. He has put on 10 pounds in the last month. तो ये सारे हमने देखे। इसमें पुट ऑन समथिंग में हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रिटेंड करना, प्रोड्यूस करना और वेट गेन करना। पुट समवन ऑन। नेक्स्ट इसको हम यूज करेंगे टू ट्राई टू परsuade someone that something is true। किसी को ये समझाना कि ये सही है, उसको मनाना, लेकिन वो सही नहीं है। सो इस सेंस से भी हम यूज करेंगे। सी सेड सी वाज प्लानिंग टू गिव हर हाउस टू ए चैरिटी फॉर द होमलेस, बट आई थॉट सी वाज पुटिंग मी ऑन। सो किसी को इस गलत समझाना, किसी को परस्यू करना कि ये सही है, उसको मनाना, लेकिन वो सही नहीं है, इस सेंस से भी हम पुट ऑन को यूज करते हैं। सो समवन दैट समथिंग इज ट्रू, हम उसको उसको समझा रहे हैं कि ये सही है, लेकिन वो सही नहीं है। नाउ पुट समवन ऑन समथिंग, टू से टेल समवन टू स्टार्ट टेकिंग ए particular medicine or eating particular foods. Doctor put her on antibiotics after discovering an infection. My coach put me on high protein diet. Doctors put her on antibiotics after discovering an infection. My coach put me on a high protein diet. So put someone on something, prescribing something or giving suggestion. In this sense also, we can use the use of put on. Now we can use put on, an attempt to deceive someone into believing something that is not true. An attempt to deceive someone into believing that something that is not true, जो सही नहीं है. She is really not angry. It is just a put on. She is really not angry. It is just a put on. Put someone on. इसको हम कहावत की तरह, मुहावरा की तरह भी यूज करते हैं. To joke with someone by saying or something that is hard for the person to believe. To joke with someone by saying something that is hard for the person to believe. I hear Joe has quit his job. You are putting me on. I hear Joe has quit his job. You are putting me on. Put someone on something, we can use as doctor's advice or doctor's order also. So like this, we can use doctor put her on antibiotics after discovering an infection. Doctor put her on antibiotics after discovering an infection. He has putting me on a liquid protein diet. So here we put on, we can use doctor's order, doctor's advice. Put on something we can use to move something you wear onto your body. Put your shoes on. See, put on too much makeup. Put on something. It is also used to add or increase an amount of action. किसी action को बढ़ाना और घटाना. ठीक है? To add or increase an amount of action, amount or action. I put on weight when I went away to college. I put on weight when I went away to college. The school puts a lots of emphasis on music and art. The school puts a lot of emphasis on music and art. Here, something is increasing in amount. पुट ऑन समथिंग हम स्टार्ट करने के पर्पज से भी यूज करते हैं. टू स्टार्ट ए पीस ऑफ इक्विपमेंट और टू प्लेस ए रिकॉर्डिंग इन ए डिवाइस दैट विल प्ले इट. पुट ऑन दैट एयर रहमान सीडी, उसको चलाओ, स्टार्ट करो. आई पुट ऑन द ब्रेक्स टू फास्ट एंड द कार स्कीडेड. I put the heat on, but it will take a minute for the car to warm up.
Put on something we can use also to do an activity, especially one that others can watch, जो दूसरा देख सकता है. The second graders want to put a play on. The second graders want to put a play on. The experience of putting on a campaign was exciting. So here put on something we are using to add something, to do something, to do something. Put on something or someone, pretend, bahana karna, to appear to have a feeling or way of behaving that is not real or not natural. जो real नहीं है, जो natural नहीं है. I can't tell whether he is really upset or if he is just putting it on. So हमने देखा हम put on को कई तरह से यूज कर सकते हैं, कई तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज वी आर एबल टू यूज इट, पुट ऑन.